Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात। सभी को नमस्कार। अगर हम बात करें तो केवाईसी का मतलब है अपने ग्राहक को जाने और कभी कभी अपने ग्राहक को जाने। केवाईसी या केवाईसी जांच खाता खोलते समय और समय समय पर ग्राहक की पहचान और सत्यापन करने की अनिवार्य प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ग्राहक वास्तव में वही हैं जो वे होने का दावा करते हैं। केवाईसी सत्यापन का उपयोग कौन करता है? अंततः केवाईसी सत्यापन का उपयोग किसी संगठन द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए किया जाता है। बैंक, फॉर्च्यून 500 वित्तीय फर्म, क्रेडिट यूनियन, क्रेडिट कार्ड कंपनियां, फिनटेक, रियल एस्टेट और बीमा कंपनियां सभी केवाईसी सत्यापन का उपयोग करते हैं। केवाईसी आवश्यकताएं क्या है? 2 बुनियादी अनिवार्य केवाईसी दस्तावेज फोटोग्राफ के साथ पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण है। ड्राइवर का लाइसेंस या पासपोर्ट। आईडी केवाईसी सत्यापन में उपयोग किए जाने वाले 2 दस्तावेज हैं। खाता खोलते समय अपनी पहचान स्थापित करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, जैसे बचत खाता, सावधि जमा, म्यूचुअल फंड और बीमा। बैंकिंग में केवाईसी प्रक्रिया क्या है? केवाईसी या अपने ग्राहक को जाने प्रक्रियाओं का एक सेट है जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को उन संगठनों और व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि करने की अनुमति देता है जिनके साथ वे व्यापार करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे संस्थाएं कानूनी रूप से कार्य कर रही हैं। निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं को केसीसी इलेक्ट्रॉनिक अपने ग्राहक प्रक्रिया को जाने। केवाईसी जोखिम क्या है? केवाईसी जोखिम रेटिंग ग्राहकों द्वारा कंपनी के लिए लाए जा सकने वाले मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम की गणना है। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण जैसे वित्तीय अपराधों में शामिल किसी व्यक्ति के साथ व्यापार न करें। केवाईसी नीति बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए ग्राहक पहचान प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाने वाला एक अनिवार्य ढांचा है। अपने ग्राहकों के लिए कम व्यवधानों की अनुमति देकर राजस्व और समृद्ध सहभागिता उत्पन्न करें। बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए उद्योग के अग्रणी समाधानों को सक्रिय करें। विश्व स्तर पर भुगतान स्वीकार करें। सरकारी विभागों, बीमा सेवाओं, कॉर्पोरेट क्षेत्रों, वित्तीय सेवाओं और पेशेवर सेवाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले केवाईसी के साथ क्षति और जोखिम। अपने ग्राहक या केवाईसी प्रक्रियाओं को जानें। ग्राहकों की पहचान और सत्यापन करने में संगठनों की सहायता करें। ग्राहक की उचित परिश्रम और पहचान सत्यापन करने से अवैध गतिविधि या मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लोगों या संगठनों के साथ अनजाने में काम करने का जोखिम कम हो जाता है। केवाईसी के 4 तत्व क्या है? केवाईसी नीति में निम्नलिखित 4 प्रमुख तत्व शामिल हैं। ग्राहक स्वीकृति नीति, ग्राहक पहचान प्रक्रियाएं, लेनदेन और जोखिम प्रबंधन की निगरानी। केवाईसी कितने प्रकार के होते हैं? आधार आधारित केवाईसी, ई केवाईसी, ऑफलाइन केवाईसी या व्यक्तिगत सत्यापन, आईपीवी केवाईसी। केवाईसी कहाँ आवश्यक है? कानून के अनुसार वित्तीय संस्थानों को ग्राहक की पहचान की वैधता स्थापित करने और जोखिम कारकों की पहचान करने के लिए केवाईसी आवश्यक है। केवाईसी प्रक्रियाएं पहचान की चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय धोखाधड़ी, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य वित्तीय अपराधों को रोकने में मदद करती हैं। केवाईसी किस वर्ष शुरू किया गया था? केवाईसी की प्रक्रिया और इसके दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 2002 में पेश किए गए थे। ये दिशा निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत जारी किए गए हैं। केवाईसी आमतौर पर बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए खाते खोलते समय पूरा किया जाता है। ऑनपैसिव सर्वोत्तम केवाईसी का उपयोग कर रहा है। यह इकाईसी या इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर का उपयोग कर रहा है। अपने सहयोगियों और ग्राहकों को किसी भी वित्तीय नुकसान से बचाने का बिना किसी परेशानी वाला तरीका। ऑनपैसिव के ओ वॉलेट ऑनपैसिव के सभी सहयोगियों के बैंकों से कनेक्शन है। ऑनपैसिव के पारिस्थितिकी तंत्र के डिजिटल उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन को ओ वॉलेट में रखा जाता है और ई केवाईसी प्रणाली के द्वारपाल के रूप में उपयोग करते हुए ऑनपैसिव सहयोगियों के बैंकों में स्थानांतरित किया जाता है। सहयोगी कंपनियों के अलावा कोई भी धनराशि नहीं निकाल सकेगा। ये प्रक्रिया केवल एक ही रास्ता है, जिसका अर्थ है कि अर्जित कमीशन ऑनपैसिव द्वारा जमा किया जाता है, और केवल एक ही रास्ता है जो केवल सहयोगियों द्वारा जमा किया जाता है। यह ई केवाईसी ऑनपैसिव द्वारा इन हाउस तैयार किया जाता है। ओवरफाई आसन है, वो कितना प्यारा है। ऐसा करने के लिए श्री एश मुफारा और आपके तकनीकी स्टाफ को धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट। आज हमारे साथ रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।
Important message now updated in English. We are in it to win it, dear all founders. Have a good day. This message to all our Onpassive family members. Thank you so much to all the Onpassivians. KYC means know your customer and sometimes know your client. KYC or KYC check is the mandatory process of identifying and verifying the client's identity when opening an account and periodically over time. In other words, banks must make sure that their clients are genuinely who they claim to be. Who uses KYC verification? Ultimately, KYC verification is used by an organization to verify the identity of their customers. Banks, Fortune 500 financial firms, credit unions, credit card companies, fintech, real estate, and insurance companies all use KYC verification. What are KYC requirements? The two basic mandatory KYC documents are proof of identity with the photograph and a proof of address. A driver's license or passport ID are two documents used in KYC verification. These are required to establish one's identity at the time of opening an account, such as a savings account, fixed deposit, mutual fund, and insurance. What is KYC process in banking? KYC or Know Your Customer is a set of processes that allow banks and other financial institutions to confirm the identity of the organizations and individuals they do business with and ensures those entities are acting legally. Onpassive users the KCC. Electronic Know Your Customer process. What is KYC risk? The KYC risk rating is a calculation of money laundering risk customers might bring to the company. It ensures that organizations don't do business with a person involved in financial crimes, such as money laundering or terrorist financing. The KYC policy is a mandatory framework for banks and financial institutions used for the customer identification process. Generate revenue and richer engagement by allowing fewer disruptions for your customers. Activate industry-leading solutions to gain a competitive advantage in the marketplace. Accept payments globally. Damage and risk exposure with KYC used by government departments. Insurance services, corporate sectors, financial services, and professional services. Know Your Customer or KYC processes. Help organizations to identify and verify customers. By carrying out customer due diligence and identity verification, the risk of unwittingly working with people or organizations involved in illegal activity or money laundering are minimized. What are the 4 elements of KYC? The KYC policy consists of the following 4 key elements. Customer acceptance policy, customer identification procedures, monitoring of transactions and risk management. What are the types of KYC? Aadhaar-based KYC, eKYC. Offline KYC or in-person verification, IPV KYC. Where is KYC required? By law, KYC is required for financial institutions to establish the legitimacy of a customer's identity and identify risk factors. KYC procedures help prevent identity theft, money laundering, financial fraud, terrorism financing, and other financial crimes. Which year was KYC introduced? The process of KYC and its guidelines were introduced by the Reserve Bank of India (RBI) in 2002. These guidelines are issued under the Banking Regulation Act of 1949. KYC is generally completed by the banks while opening accounts for its customers. Onpassive is using the best KYC. It is using eKYC or Electronic Know Your Customer, the no-hassle way of protecting its affiliates and customers from any financial harm. The O-wallets of Onpassive are the connections to the banks of all affiliates in Onpassive. Commissions from sales of Onpassive's ecosystem's digital products are placed in the O-wallets and transferred into the banks of the Onpassive affiliates, using as gatekeeper the eKYC system. No one will be able to withdraw funds but the affiliates. The process is only one way in, meaning the commissions earned are deposited by Onpassive, and only one way out, only by affiliates. This eKYC is produced in-house by Onpassive. Overify is imminent. How sweet is that? Thank you Mr. Ash Mufara and your technology staff for making this happen. Please subscribe, like, and share with the ones you love. Thanks for watching our videos.